Hello everyone, welcome to D Resort. So this is Hibiki and these are Hibiki's owner, Alankita ma'am and unke bhaiya. So today we're going to show them how to use the leash, the choke chain, the clicker, the treat and how to use it on their own dog. So he's almost a 12-month-old indie and we're going to start with very basics is when you have a dog and आप थोड़ा जल्दी में हो आप dog अपना control नहीं कर पाते हो all you can do अगर उसको belt नहीं लगा normally लोग घर के अंदर belt लगाते नहीं हैं so आप इसको क्या करो इसको choke में convert करो you can easily put this on Hibiki Shan and it turns into a choke. It will not choke your dog, it will just give you a good control of the dog. So now there is another one. So this is called a choke chain. Good boy. This is called a choke chain. How to use it? It looks like this. You can find it in a normal pet shop. You wanna hold it? So we're going to teach them how to do it with it. We're using two of the chains at the moment. You can easily turn this into a normal belt. जो आपका normal collar भी होता है उसको आप अटकाते हो. It gives you a handle. So ये बहुत easy जुगाड़ है. देसी Indian भाषा में बोला तो this is basically a जुगाड़. How to put on a leash is this hand comes out of this one. जैसे ये hand है हमारा अंकिता नाम. Sit. Stay. So basically this one comes out of this one. इसके अंदर से निकल जाता है. It looks something like this. Excited he is born. In the bus. So basically, when you want to keep your dog on the left, ये आपके ऐसे रहता है हाथ के अंदर इसको ऐसे रखता है. Then you put down. इसके अंदर चला जाता है. Now it gives you the control of the dog, and it uses another chain up. And this pull out. Now this one we pull it out. This is basically for the emergencies. जो ये बनाया है ना, this is basically for the emergencies. We don't use it for any other purpose. So this one we throw out. So this is a Hibiki. Now because he understands treat and the concept of treat, so when you have your dog under control, sit. Good boy. Easy control. So when you have your dog under control, so now जब आप अपना डॉग घुमाने निकलते हो चाहे स्ट्रीट पे हो चाहे जैसे हो दिस इज बेसिकली हैंडल को राइट में करते हैं पूरा उस टेलिंग यू अर्लियर एंड दिस यू कंट्रोल इट लाइक दिस वन. सो नाउ अब आपके पास दो जगह से आपका डॉग कंट्रोल है. अब आप इसको चाहो तो ऐसे पकड़ लो कि मेरे को ज़्यादा स्पेस नीचे डिपेंडिंग ऑन योर हाथों का साइज वगैरह. इसको हमेशा ऊपर रखना गले के पास या कान के नीचे रहेगा ही. This is because he is behaving badly, not to. It is not a permanent thing. It is till he is not trained. Like उसमें 4 महीना लगे, 5 महीना लगे, 6 महीना. We're gonna use it. So now when you walk, it gives you control. जैसे आप हल्का सा चुप करते हो, just do this, and the dog stays back. Because you have to teach him. Nobody taught him the direction. कि अगर इसको कोई walk करवा रहा है, तो मैं इसको normal ऐसे छोड़ता हूँ, तो ये खींचने लगेगा. But when he's on a proper leash, and I'm asking him, अगर इसको जैसे प्रॉपर सेट सेट अभी है ना बस जैसे पहले खींच रहा था यू गिव यू दिस डॉग यू वॉक हिम एंड डू सम करेक्शंस वन बाय वन यू गाइस डू इट. तो जैसे आपको लगता है जैसे आप नॉर्मल वॉक कराते हो वैसे करते हो. आप जो बोलना है आप फील कंफर्टेबल. द वीडियो माइट नॉट गो ऑनलाइन तो आप दिमाग में ऐसा लो जस्ट रिकॉर्ड हिम. कीप हिम अंडर कंट्रोल. डोंट लेट हिम गो. यही गलत है. देखो आपका डॉग आपके आगे नहीं रहना चाहिए. योर डॉग आप अगर लीड करोगे देन योर डॉग शुड लीड. मतलब आपका डॉग आपको फॉलो करना चाहिए. वी वांट हिम टू बी अ फॉलोअर. तो आपके साथ है. व्हेन यू वॉक हिम गो यू कैन गो राइट सीधा चले जाओ कोई दिक्कत नहीं. So now this is chain नीचे जाता है ना. Basically you have to understand where the position of the chain is. So we're going to do this now. You have to be a little same dog. थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंस रखो हाथ पे. Now walk. Very good. Calm. Easy boy. Easy. Good boy. Good boy. Now easy. Sit. Sit. Walk. Now it gives you better control of the dog. Sit. आप
आपको हर बार ट्रीट यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है. यू हैव टू टीच हिम एवरीथिंग. तो अगर आप इसको लूज भी कर देते हो, नाउ ही इज नॉट गोना बिहेव इन द सेम मैनर. अब अगर मैं लूज भी कर देता हूँ, सो यू डोंट वॉक दिस वे, सो लीश में टेंशन. This is basically a practice thing. You have to come at it again and again. We're going to show you clicker. I give you a clicker, right? So this is basically a clicker. You can use it, you don't, it's up to you, right? We use this. So when I want my dog to walk properly, this is a longer thing. अभी इसको भी नहीं समझ आएगा, इसको भी इसका concept है. We're just teaching you this, what the concept is. So one click means he's made a mistake. When you do this, see? So he's going to come on to this one. Sit. Sit. He sits, double click, so now his brain functions कि अगर मैं तमीज से रहा, डबल क्लिक होएगा तो मेरे को ट्रीट मिलेगा. अगर मैं इसको बोलता हूँ कम, so now we teach him one by one everything. Good boy. So now we want him to learn that when he follows whatever I say, and when I walk him and he walks nicely, double click. Here we go. Walk. Walk. No. Walk. So the same dog, one who's a big puller, to a dog, थोड़ा ये curious रहेगा because see, he's a dog. No. Now he made a mistake, so we just did one click and he moved around. So there is no punishment involved, which means no hitting, no khechatani. You just give him directions. When he makes a mistake, now because it's a detailed work, तो आपका इतना समय नहीं होता. That's why we come into the picture. Like he wants to go somewhere, every now and then release the tension. Don't put too much of tension all together. Normally क्या होता है, जैसे थोड़ा सा dog train होता है, लोग क्या करते हैं, उसे सीखा 20% है, pressure 100 का करते हैं उसके ऊपर. Now the dog breaks, वो permanent खराब होता है. So slowly जैसे इंसान का बच्चा ABCD कैसे सीखा? ABCD सीखा तो apple बोलना भी सीखेगा, फिर apple को एक sentence में use करना सीखे. It takes time to build up that. And you can use any treat you want. You can use a biscuit, घर की कोई चीज़ बनी हुई है. You can use. Here we keep. Sit. Walk. So the dog will follow you slowly. Get the idea? So we're gonna do the same thing with Bhaiya. आप clicker use मत करो, आप normal walk करो. Because you don't know how to use the clicker, आप normal walk करो. This is basically a practice thing. You have to come, you have to check the. Now look at the dog's movement. You have not done much. You just want him to follow you. Now it will slowly build up, one step at a time, one step at a time, one step at a time. And one day your dog will follow the lead. Your dog will take you, like आप कहीं पे भी लेके जा रहे हो, ये तमीज से पेश आएगा. Because now he knows who's the leader in the house. Good boy. So when he does something very nice, you give him a big reward. Like हर बार single treat होता है. Sometimes it's like, and he's like, I did something good. At the end of the session, give him lots of treats. अगर वो अच्छा perform किया, so we are अच्छा मतलब 55% के ऊपर correction है, so that's a good performance for the dog. So you give him a lot of treats. अगर उससे कम है, not every day is same. Like अपन रोज जिम जाते हैं, अपने लिए सेम नहीं होता रोज अपना परफॉर्मेंस नहीं निकलता जिम के अंदर. सेम आपके डॉग का है. Stop punishing your dog if your dog is not performing. क्या पता उसका पेट दुख रहा है, क्या पता उसको indigestion है, उसको acidity है. So you have to be a little, वैसे थोड़ा ऐसे ढीला रहना पड़ता है कि चल तू सीख रहा है. Majority of the owner क्या करते हैं, जैसे थोड़ा सा सीखते हैं उसको फिर प्रेशर मारते हैं. प्रेशर नहीं करते. वो सीखा, आप अच्छा कर रहे हैं, उसको धीरे धीरे करके बिल्ड. That is all for today. Thank you guys.